गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है द फिस्कल टाइट रोप फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वाइट पेपर्स रिसेंटली रिलीज़ किए गए हैं केरला और तमिलनाडु द्वारा, और वो जो उनका आउटस्टैंडिंग डेट है वो बहुत ज़्यादा है, ये दिखा रहे हैं। एक डिबेट अराइज हो रही है स्टेट के फाइनेंसिस पर। स्टेट डेब्ट को मोस्टली फिस्कल मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट माना जाता है, जबकि ये मिसमैच होता है कई बार डेवलपमेंट के एस्पिरेशंस का और लिमिटेड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स का। जब प्रॉब्लम है वो है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इंडियन फेडरलिज्म में। डेट जो है ओवर द ईयर्स बिल्ड होता है थ्रू डेफिसिट्स। की मिसमैच यहाँ पर क्या आता है कि जो पावर टू रेज टैक्सेस है वो ज़्यादातर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है, और जबकि जो स्पेंडिंग का जो शेयर होता है वो ज़्यादा स्टेट्स के पास आ जाता है। तो मोस्ट जो स्टेट का एक्सपेंडिचर होता है वो सोशल सेक्टर्स या इकोनॉमिक सेक्टर्स पर जाता है। केरला में अगर हम देखें, जैसे हाई सोशल सेक्टर स्पेंडिंग रही है सिंस 1960s, और वो उसकी सोशल प्रोग्रेस के लिए तो सेंट्रल रही है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो है वल्नरेबिलिटीज़ उसने क्रिएट की हैं, जो हम आगे देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि स्टेट्स कैसे अपने आप को फंड करती हैं। अपने खुद के रेवेन्यूज़ होते हैं उनके, जैसे स्टेट का जीएसटी या सेल्स टैक्स। फिर होता है यूनियन ट्रांसफर्स, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है उन्हें। केरला का केस दिखाता है कि उसके पास गुड रिकॉर्ड है कि वो अपने टैक्स रेवेन्यू खुद जनरेट कर पाता है, 1.5 टाइम्स द ऑल इंडिया पर कैपिटा एवरेज। लेकिन उसका जो यूनियन टैक्स डेवोल्यूशन है वो सिर्फ 1.92% है, जबकि उसकी 2.6% शेयर है टोटल पॉपुलेशन में। अब स्टेट जो टैक्स करती है खुद को अच्छे से, उसको प्रोपोर्शनली लेस मिल रहा है सेंटर से, ठीक है। अब ये ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं केरला के पास, उसमें से सिर्फ वो 10% ही जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगा रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर एक्चुअल में बिल्ड होता है। बाकी का जो सारा खर्चा है वो उनका डे टू डे के एक्सपेंडिचर में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरीज में, पेंशन में, इंटरेस्ट में। इसलिए उनके पास इन फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रैप है, ये केरला में एक बहुत बड़ा ट्रैप है कि अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करेंगे तो उससे जो उनके सोशल सेक्टर की स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाएगी। लेकिन लार्ज इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन या रिसर्च में ज़रूरत है, वो उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो एजुकेटेड यंग लोग हैं वो केरला को छोड़ रहे हैं लार्ज नंबर्स में। एक और पैराडॉक्स ये है, गवर्नमेंट की फिजिकल कैपेसिटी इतनी वीक है कि उससे जो है ये दिख रहा है। अब जब भी आप हमेशा देखोगे जो कि जिसको अब समाजवाद कहा जाता है या सोशलिज्म कहा जाता है, कि गवर्नमेंट की जब कैपेसिटी वीक हो जाती है तो जो प्राइवेट लोग हैं, जो एलीट सेक्शन है, वो ज़्यादा अमीर होने लगता है, और जो नीचे के जो गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा गरीब होने लगता है। तो प्राइवेट एफ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर लार्ज हाउसेज हैं, एक्सपेंसिव कार्स हैं, डेंस गोल्ड शॉप्स हैं। तो इनइक्वालिटी जो है वाइडन हो रही है उसकी वजह से ज़्यादा। अब चाइना के कंपैरिजन में इंडिया का मॉडल को हम अगर हम देखें तो इंडिया के कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। चाइना में क्या होता है कि प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट जो है वो बल्क ऑफ ग्रोथ बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो हैविली बोरो कर सकते हैं कंट्री के लार्ज डोमेस्टिक सेविंग पूल से। चाइना की जो लोकल गवर्नमेंट है उनको बैंकिंग सिस्टम से बहुत ही कम परसेंटेज पर जो है वो बोरोइंग मिलती है, जबकि इंडियन स्टेट्स को ज़्यादा परसेंटेज पर इंटरेस्ट रेट पर बोरोइंग मिलती है। इंडियन स्टेट्स जो है वो डबल स्क्वीज फेस कर रही हैं, मतलब कितना वो बोरो कर सकती हैं वो भी, उस पर भी लिमिट है, और जितना वो बोरो करती भी हैं उस पर उनको हाई कॉस्ट देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं मोस्टली इंडिया में अगर हम देखें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस द्वारा ही परचेज किए जाते हैं, जैसे बैंक या इंश्योरेंस कंपनीज। और ये इंस्टीट्यूशंस इन सेविंग्स को, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सेविंग्स जो कि ऑर्डिनरी लोग उनमें पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसी पैसे को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, ठीक है। तो मतलब जब अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो एक तरह से वो सिटीजन से ही बोरो कर रही है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2026। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और रैपिड एडवांसेस इन एआई जो है दो मोस्ट सिग्निफिकेंट फोर्सेस हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम को रीशेप कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव बायएनुअल पब्लिकेशन होती है आरबीआई की, जो 2010 से रिलीज़ की जा रही है। ये ओवरऑल हेल्थ, रिजिलियंस, रिस्क जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, उनको एवेल्युएट करती है। एक तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है सिस्टमिक इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने का। अब जो ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है कि जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स और फ्रेगमेंटेशन जो है उससे इंक्रीज रिस्क है एडवर्स एक्सटर्नल शॉक्स का। रैपिड एडवांसमेंट्स जो एआई में हुई है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी को और फाइनेंशियल सिस्टम्स को। आरबीआई ने आइडेंटिफाई किया है सेवरल वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है, जैसे कि हाई पब्लिक डेट, फ्रेजाइल ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स, या फिर कुछ सेंट्रल बैंक्स जो कि हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जैसे यूएस का फेड रिजर्व,
आरबीआई ने ऑब्जर्व किया है कि डिस्पाइट ऑल दीज एक्सटर्नल शॉक्स इंडिया की इकोनॉमी रिजिलियंट है। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स जो हैं अच्छे से काम कर रहे हैं इंडिया में। अब उसका ये जो है इफेक्ट क्या है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है बैंक्स की वो सबसे लो लेवल पर है इस समय पर। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या बाकी के बैंकिंग ग्रुप्स में भी इंप्रूवमेंट है। आरबीआई के हिसाब से बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी, कंफर्टेबल लिक्विडिटी, हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी, लो एनपीएस और रॉबस्ट क्रेडिट ग्रोथ जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। जो एनुअल स्लिपेज रेशियो है लोन डिफॉल्ट्स की वो अपने 4 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। क्रेडिट क्वालिटी भी जो है वो अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई है। जो शेयर ऑफ लार्ज बोरोअर्स है वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ, लेकिन जो उनकी एसेट क्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि बेटर क्रेडिट मैनेजमेंट है, रिकवरी अच्छी है लार्ज कॉर्पोरेट बोरोअर्स से। जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो रॉबस्टली सपोर्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट एक्सपेंशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। आरबीआई ने एम्फेसाइज किया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है बियॉन्ड रेगुलेशन भी जो है वो जाती है, और वो फेयर जो है पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फेयर बिजनेस कंडक्ट होना चाहिए, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन होनी चाहिए, एफिशिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज होनी चाहिए, कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीआरओ अपनी 16th रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट ब्रह्मांक सेलिब्रेट कर रहा है। ये एक इनिशिएटिव है बीआरओ का। 2011 में जो है ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ था डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए स्ट्रेटजिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल कनेक्टिविटी देने के लिए आर्म फोर्सेस को। अब ये बीआरओ क्या है? एक रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है इंडिया में जो इंडियन आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम कर रही है 2015 से ये, लेकिन इसे 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोट एरियाज़ में बनाया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरप्लेनेटरी कोरोनल मास इजेक्शंस। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं उन्होंने कुछ न्यू इंसाइट्स अनकवर किए हैं कि कैसे लार्ज सोलर इरप्शंस, जिनको हम आईसीएमईज कहते हैं, ये थर्मली इवॉल्व हो रहे हैं। तो थर्मली इवॉल्व होते हैं। तो ये कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होता है? बेसिकली मैसिव ब्लास्ट ऑफ मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा जो सन के आउटर एटमॉस्फेयर से निकलता है और ये अर्थ की तरफ आता है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से एनकाउंटर करता है। फिर उसकी वजह से जो है कलरफुल ऑरोराज बनते हैं जो आपके अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में। और जो 11 साल की सन की साइकिल होती है उसमें जो है सब सोलर मैक्सिमम होता है, तब सबसे ज़्यादा ये आईसीएमईज निकलते हैं। और इससे कई एडवर्स इफेक्ट होता है वर्ल्ड के या फिर जो है अर्थ के सैटेलाइट ऑपरेशंस पर, जीपीएस रेडियो कम्युनिकेशंस पर, एविएशन राउट्स पर, पावर ग्रिड्स पर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एंड अपार ये एक ट्रस्टेड डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। यूजीसी इसको रेगुलेट करता है। हर लर्नर की जर्नी को सपोर्ट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि ताकि उनके स्टोर, मैनेज और ट्रांसफ़र या रिडीम हो सके एकेडमिक क्रेडिट्स जो स्टूडेंट्स अर्न करते हैं रिकग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्रेडिट डेटा को डायरेक्टली एबीसी पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं हर स्टूडेंट के अकाउंट में। स्टूडेंट्स फिर उसको अक्यूमुलेट, ट्रांसफ़र या रिडीम कर सकते हैं और ये क्रेडिट्स जो हैं 7 साल के लिए होते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीपल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रेडिट्स को बिटवीन देयर प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और स्टूडेंट्स को 40% तक क्रेडिट्स जो हैं वो स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मिलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आयुष्मान सारथी। ये टॉपिक भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आयुष्मान सारथी, एक व्हाट्सएप चैट बॉट जो इनेबल करेगा बेनिफिशरीज को एक्सेस करने के लिए की सर्विसेज अंडर आयुष्मान भारत। इसको डेवलप किया गया है बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और ये डिलीवर करेगा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन और परफॉर्म करेगा सर्विसेज डायरेक्टली विद इन द चैट विंडो, ताकि फिजिकल विजिट्स जो हैं वो यूज़र्स को ना करनी पड़े हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएन एसकैप। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक यूएन एसकैप की रिपोर्ट के हिसाब से डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो एशिया पैसिफिक की हैं उनका जो एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस गैप है वो 800 बिलियन डॉलर्स तक का है। तो यूएन एसकैप क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है एशिया पैसिफिक रीजन में, 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था प्रमोट करने के लिए कॉपरेशन अमंग 53 मेंबर स्टेट्स और 9 एसोसिएट मेंबर्स। ये वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशन हैं यूएन के। ये प्रमोट करना चाहता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट थ्रू रीजनल एंड सब रीजनल कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन। बैंकॉक में, थाईलैंड में बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is the fiscal tightrope for state governments. This topic is important for governance and economy section. So white papers have been recently released by Kerala and Tamil Nadu, and they are showing alarming levels of outstanding debt. So this has revived a debate about state finances. State debt is often unfairly dismissed as fiscal mismanagement, whereas they also reflect a mismatch between development aspirations and limited fiscal capacity of states. So the heart of the problem lies in a structural imbalance in Indian federalism. Debt builds up over years through deficits. The key mismatch here is that the power to raise taxes rests largely with the union government, but the larger share of overall public spending is borne by the states. So most state expenditure goes to social and economic sectors. So in Kerala, high social sector spending since 1960s have been central to its social progress, but this is just a tip of the iceberg. So, how states fund themselves? Let's understand this. States meet their expenditure through own revenues and union transfers. So, Kerala's case shows that it has a good record of raising own tax revenue, that is 1.5 times the all India per capita average, but its share in union tax devolution has been low. So, basically, a state which taxes itself well still receives proportionally less from the center. But this is not the only case. A closer look at Kerala's finances or Kerala's budget says that despite its limited resources, just 10 just 10% is going towards capital expenditure, that is the investment in the future. The rest is just day to day expenditure. The entire out of the entire budget, 90% is day to day expenditure, mostly on salaries, pensions, interest on market borrowings. So there is very little left to invest in the future. So there is a trap for Kerala. If it cuts revenue expenditure, then it risks eroding its social sector strengths. But it urgently needs large investment in the infrastructure, higher education, and research. For that, it has no money. Okay, so the human cost is therefore visible. People, educated young people, they are leaving Kerala in large numbers because the state cannot create opportunities for them. So there is also a paradox. The government's weak fiscal capacity contrasts with visible private affluence. So what happens is that mostly in the socialist economies, we have seen that uh, after a certain while, the elite section gets disproportionately large number of resources uh, as compared to the below criteria or the below class or the proletariat class for per se. And this is actually a paradox. What socialism wanted to achieve, it ends up doing opposite of that. Okay, so analysts are also contrasting uh, India's constraints with China's economic model of decentralized investment-led growth. In China, what happens is that provinces and local governments, they undertake the bulk of growth boosting investments, borrowing heavily against the country's large domestic savings pools. But their efforts are coordinated through central government planning as well. And the difference is stark. The Chinese local governments borrow from their banking system at just about 2%, whereas Indian states pay far more, even more than 6 to or 7%. So Indian states are squeezed twice. First, they face limits on how much they can borrow. Then, even if they borrow at higher cost. Okay, so government bonds, they are mostly bought by domestic institutions like banks or insurance companies, and these institutions, they basically use the savings of ordinary people which are deposited with them. So when government is borrowing, it is basically borrowing from its own citizens, okay, in India. So the next topic is RBI's Financial Stability Report 2026. This topic is important for economy section. RBI has released its latest financial stability report, highlighting that geopolitical fragmentation and rapid advances in AI are emerging as two most significant forces reshaping the global economy and financial system. So FSR is basically a comprehensive biannual publication released by RBI since 2010. It evaluates the overall health, resilience, and risks within the Indian financial system. It acts as an early warning system to identify the issues. Okay, so what are the risks identified by RBI? So rising geopolitical conflicts and fragmentation have increased the risk of adverse external shocks. Rapid advancements in AI are transforming economic activity and financial systems. RBI has identified several vulnerabilities which can amplify future crises like high public debt, fragile global bond markets, elevated asset valuations,
possibility of central banks maintaining a hawkish monetary policy, basically the US Fed Reserve. Okay, so RBI has also observed that Indian economy has remained resilient despite significant external challenges, and central bank has reaffirmed its commitment to strengthening institutional safeguards as well. So gross NPAs of banks declined to a multi-decadal low. And this improvement is not just based on the private sector but also public sector and other banking groups as well. So, according to RBI, banks and NBFCs, they also maintain strong capital adequacy, comfortable liquidity, healthy profitability, low NPAs, and robust credit growth. The loan defaults are also declining. Okay, and the annual slippage ratio has declined to over the last 4 years. Credit quality has also improved across all major sectors. The share of large borrowers in total bank credit has also increased marginally, but their asset quality has improved significantly, which indicates better credit management and recovery among large corporate borrowers. So, financial system is continuing to support investment, credit expansion, and economic growth. Okay, so the next topic is Project Brahmank. This topic is important for your security section. BRO has celebrated its 16th raising day of Project Brahmank, so which was raised in 2011 at East Siang district of Arunachal Pradesh. It is responsible for development and maintenance of strategic road infrastructure. Okay, and it has been instrumental in providing strategic and operational connectivity to the armed forces. So what is BRO? It's a road construction executive force in India, which provides support to the Indian armed forces. It was entirely brought under the Ministry of Defense in 2015, even though it was established in 1960 to secure India's borders and develop infrastructure in remote areas. So the next topic is interplanetary coronal mass ejections. This topic is important for your science and tech section. So Indian astrophysicists have uncovered new insights into how large solar eruptions called the ICMEs evolve thermally during their journey from the sun to the earth. So ICMEs are basically massive blasts of magnetized plasma released from the sun's outer atmosphere. They are directed towards earth and they encounter earth's magnetic field. They produce color dazzling auroras in earth's upper atmosphere. So during the level of activity of the sun, it has basically a 11-year cycle where more ICMEs are created during the maxima of these cycles. Okay, and these storms have adverse effects on satellite operations, GPS, radio communications, aviation routes, and power grids. So the next topic is Academic Bank of Credits. This topic is important for your governance section. So Academic Bank of Credits and APAR are building a trusted digital ecosystem for academic records. So Academic Bank of Credits is a revolutionary digital platform by Ministry of Education, regulated by UGC. It is built to support every learner's journey by providing a digital platform for storing, managing, transferring, and redeeming the academic credits earned by these students from recognized educational institutions. So academic institutions basically upload the credit data directly to the ABC portal against each student's account. Students can accumulate, transfer, and redeem credits across higher educational institutions without losing academic progress. Credits are valid for a maximum of 7 years. Students can study across multiple higher educational institutions and transfer their credits seamlessly between the programs and institutions. Students may avail up to 40% of credit from the Swayam online platform as well. So the next topic is Ayushman Sarathi. This topic is important for your governance section. Government of India has recently launched Ayushman Sarathi, which is basically a WhatsApp chatbot for PM Jan Arogya Yojana. So this is a WhatsApp chatbot which will enable beneficiaries to access key services under the Ayushman Bharat Yojana. It has been developed by National Health Authority to deliver real-time information and perform services directly within the chat window. So it also reduces the need for physical visits by the users to healthcare facilities. So the next topic is UNSCAP. This topic is important for your international relations. A new UNSCAP report has warned that developing economies in the Asia-Pacific region face an annual climate finance gap of nearly $800 billion. So what is UNSCAP? It is the most inclusive intergovernmental platform in Asia-Pacific region, established in 1947 to promote cooperation among its 53 member states and 9 associate members. It is one of the 5 regional commissions of UN. One of the main functions of UNSCAP is to promote economic and social development through regional and sub-regional cooperation. Its headquarters is in Bangkok, that is in Thailand. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.